Hi learners, welcome back to Learn with Sonika. In the last video, we explored some important kinds of nouns. But guess what? That was just part 1. Now it's time to dive into the remaining types of nouns with clear examples and easy explanations. So stay tuned because today's video will complete your noun journey. Let's start with material noun. The definition of material noun is a noun that denotes a substance of which things are made. So बेटा वो नाउन जो ये शो करें कि कोई भी चीज़ किस सब्सटेंस से बनी हुई है या जो सब्सटेंस हम उस चीज़ को बनाने में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा नाउन यूज़ करेंगे? मटेरियल नाउन. जैसे कि एग्जाम्पल है गोल्ड, पेपर, स्टील, आयरन, वुड. बेटा ऑल ऑफ दीज आर मटेरियल नाउन्स because all of these things are made up of a substance. It is very easy to identify material noun because like a table is made up of wood. So wood is the material noun, but table is a common noun. Now come to the collective noun. The definition of collective noun is a noun that refers to groups of people, places, animals or things spoken of as one. So बेटा इसके नेम से ही श्योर है collective means here is something in a collective of, in a collection. So वो नाउन जो रेफर करे कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस को, एनिमल्स को और थिंग्स को, जिसमें कितने भी एक से ज़्यादा कितने भी लोग हो सकते हैं, कोई भी प्लेसेस हों बट वो ग्रुप में हों, मोर देन वन, इट मे बी 2, इट मे बी 3 और इट मे बी 4. वो सभी चीज़ें एक ग्रुप कहलाएंगी. तो वो ग्रुप जब वो ग्रुप एक लोगों का, प्लेसेस का या एनिमल्स का होगा और अब उनको क्या बोलेंगे? सिर्फ एक बोलेंगे एज अ वन, सिंगुलर फॉर्म. तो ये नहीं कि उसमें चाहे जितने मर्जी लोग हों बट वो ग्रुप बन जाएगा और ग्रुप हम हमेशा कोलेक्टिव ही लेंगे और उसको हम एक ही मान के चलेंगे. सो दीज आर कोलेक्टिव नाउन्स. एग्जाम्पल्स आर हर्ड ऑफ काउज, पैक ऑफ कार्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. हियर द कोलेक्टिव नाउन इज हर्ड. Here we are taking a herd of cows. There are so many cows, maybe 2, maybe 3, maybe 4. Here we are talking about the group of cows and the group of cows is called herd. And we always take collective noun as a singular form. तो यहाँ पे बेटा cows चाहे जितनी मर्जी हो बट अब जब उस काउ का ग्रुप बन गया वो हर्ड कहलाएगा, तो उस हर्ड को हम एज अ सिंगुलर नाउन लेके चलेंगे. ऐसे ही पैक ऑफ कार्ड्स. अब कार्ड्स उसमें चाहे 52 कार्ड्स हों चाहे वो 50 कार्ड्स हों बट उसका जो पूरा ग्रुप, जब उसका पूरा एक पैकेट बन जाएगा तो वो पैक कोलेक्टिव नाउन यूज़ होगा. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. सो बेटा ऑल ऑफ दीज वर्ड्स हर्ड, पैक और फ्लॉक, these are collective nouns. And one thing more beta, collective nouns have always fixed use, means a particular collective noun goes with a particular group of people, things or animals and they usually cannot be interchanged. For example, if we are using here a herd of cows, then the herd is used for group of animals. एंड पैक ऑफ कार्ड्स. सो जो भी उसका नाउन है उसके साथ एक पर्टिकुलर कोलेक्टिव नाउन ही यूज़ होगा. ये नहीं हम कह सकते कि हर्ड ऑफ कार्ड्स. लाइक हियर इज द एग्जाम्पल एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. वी कैन यूज आर्मी हियर एज अ कोलेक्टिव नाउन फॉर द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, not a pile of soldiers. If we are writing an army of soldiers, then it will get wrong, right. But if we say a
pile of soldiers. No doubt pile is also a collective noun. But the use of pile is not correct here. So it will get wrong. Like here, a bunch of keys. So here, bunch is a collective noun. And for the group of keys, we always use bunch. We can't say an army of keys. So here, it is right and it is wrong. Next noun is compound noun. The definition of compound noun is when two other nouns are combined to form a single noun, the result is a compound noun. बेटा जब दो नाउन्स मिलके एक सिंगल नाउन बनाएं तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड नाउन बन जाता है. जैसे कि बटर मिल्क. हियर बटर इज अ नाउन एंड मिल्क इज another noun, and when these two nouns are combined, these make a compound noun. Another example is tabletop. Here table is a noun and top is another noun, so these combine to make a compound noun, that is tabletop. Another example is bedroom, policeman. So here we have so many examples of compound nouns, like we can say motorcycle, football, toothpaste, blackboard, swimming pool. So that's all for the remaining kinds of nouns. I hope everything is clear now. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Learn with Sonika. Also comment below if you want the next topic. Now, if you want to do exercise, then please go to description box. It will make you easy to identify all kinds of noun in a sentence. See you in the next video. Keep learning, keep growing. Thank you and have a nice day.